हेलो चिल्ड्रन, आज के क्लास में हम लोग इंटीजर्स टॉपिक में कुछ क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल डू रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज नंबर 1 2 more than 3. 2 more than 3. So at first it is convenient to draw a number line. So at first you draw a number line, mark 0 in between the line, and already you know right side of 0 we plot positive integers and left of 0 we plot negative integers at equal intervals. So 1 2 3 4 5 6 7 8. In this way we mark integers on the number line. हम लोग इस तरह से प्लॉट कर लेते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 2 more than 3. ऑलरेडी यू नो फॉर मोर, ज़्यादा के लिए हम लोग राइट साइड मूव करेंगे, कम के लिए लेफ्ट साइड मूव करेंगे. क्वेश्चन इज 3 से 2 ज़्यादा, तो 3 से इट मीन्स कि वी एट फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर and 2 more, so 2 units more, it means 2 units right side. So starting from here 1 unit and 2 unit, so 2 more than 3 is equal to 5. B number 5 less than 3, 5 less than 3. This time again we will start from 3, then 3. 3 से 5 कम. Here is 3. इससे 5 कम. कम means we will move left side from 3. 5 units. So 1 unit, 1 unit, 2 units, 3 units, 4. So answer is -2. Now C is 4 more than -9. Then -9. It means कि we start from -9 and 4 more means we will move 4 units right side. So start from -9. 1 2 3 4. So direction of movement is from left to right. So this is equal to -5. In this way we solve the questions based on integers on the number line. Note down, and then we will do rules of addition of integers. और रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर समझने के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करना ज़्यादा अच्छा होगा. सो लीव दिस पार्ट एज इट इज. ऑलरेडी नंबर लाइन इज ड्रॉन. Okay, so first rule is, children, already you know if you add positive integers, suppose you add 5 plus 6, so already here is which sign? If no sign is there, it means कि here is plus, but it is not written. हम लोग प्लस के लिए लिखते नहीं हैं.
So 5 plus 6 already you know it is 11. Similarly, if you add 7 plus 3 plus 10, so it is 20. So what do we observe in this case? If both are having same sign, we add their numbers, we add the numbers. 5 plus 6 11, और जो साइन यहाँ पे होता है वही साइन यहाँ होता है. Here is also, यहाँ पे प्लस साइन है. तो what do we do? 7 plus 3 10 plus 10 20 we write, and here is which sign? The sign which is common, जो साइन सब में है. Similarly, this rule is applied in case of negative integers. So if I add minus 5 and minus 6, common sign is minus. So we will give common sign, just like in case of positive sign, here is plus because here plus is there. So here it is negative, so we will put minus sign here, and we will add just their number. So 5 plus 6 11. If I take some more, so this is third, 4 minus 5 minus 2 minus 7 minus 9. See, all are negative integers. So what do? We will add their number, add all the numbers 5, 2, 7 and 9, and which is the common sign? Common sign is negative. So here it will be minus, and this will be added. So 5 plus 2 7 plus 7 14 plus 9 23. So your answer is minus 23. So what is the rule? One rule is very clear. Rule 1 is to add 2 or more than 2 integers having a common sign. Common sign means plus or minus. We add their numeric value. Numeric value means its absolute value. हम लोग ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे. To add 2 or more than 2 integers having a common sign, either it is plus or minus, we add their numeric value and put a common sign in the result. I think it is clear to all of you. So note down next rule. But before doing rule 2, I will make you understand by using a question like previous rule. This time, now we will do rule 2. Now, next is add minus 5 plus 7. So start from minus 5. So here it is minus 5 and it is plus 7. So plus, for plus we will move right side. How many units? 7 units. So start from here. 1 unit, 2 units, 3, 4, 5, 6, 7. Answer is 2. The direction of movement will be from left to right. One more question. I am giving example.
this time -7 plus 9. So this time we will start from -7, movement will start from -7, and plus means movement to the right side. How many units? 9 units. So start from here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Answer is 2. Actually, this can be written as 7 minus 5. -5 plus 7 or 7 minus 5. Both have same meaning. हमने इसको पहले लिख दिया, यहाँ पे प्लस है, बट वी डोंट पुट प्लस साइन हियर. तो 7 minus 5, दिस इज 2. सिमिलरली अगर इसको पहले लिख दे तो क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे, बट वी विल नॉट पुट प्लस साइन. इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज प्लस. 9 minus 7, we are getting 2. So what is rule 2? What is rule for addition of two opposite integers? This time, in the previous rule, we have taken same type of integer, either positive or negative. This time one is negative, other is positive. हम लोग क्या कर रहे हैं? बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटा रहे हैं, और जिस नंबर का, जो नंबर बड़ा है, उसके पहले जो साइन है वो यहाँ पे साइन पुट कर रहे हैं. हमने यहाँ क्या किया? 7 से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, 2, और न्यूमेरिक वैल्यू इज 7 इज़ मोर देन 5. न्यूमेरिक वैल्यू 7 की ज़्यादा है 5 से, तो इसके पहले ही जो साइन है वो साइन यहाँ पे हमने पुट कर दिया, बट प्लस इज नॉट रिटन एक्चुअली. सिमिलरली वी हैव डन इन दिस केस. हमने 7 को सब्ट्रैक्ट किया बड़े नंबर से, 9 से, और जो बड़े नंबर के पहले जो साइन है वो साइन यहाँ पुट कर दिया. सो व्हाट इज द रूल 2? वी कैन राइट to add two opposite integers, we subtract a smaller integer from the integer having greater numeric value and put the sign of to add two opposite integers. We subtract a smaller integer from the integer having greater numeric value, and we put the sign of the integer which has greater numeric value. So these are the two rules. So next class में हम लोग इसके ऊपर और बेस क्वेश्चन करेंगे, and in this way we will proceed. अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, and don't forget to comment also. Thank you.